Okay, so now we discuss further physical quantities. So generally अगर हम लोग बात करें that can be measured. So what is the meaning of the physical quantity? The quantities this can be measured are called the physical quantities. Like a distance is a physical quantity, time is a physical quantity, okay? But love is not a physical quantity. So love we cannot measure the anger and love. So the love, anger are not the physical quantity. So the which can be measured are called the physical quantities. Now what is the unit? So unit is a system of the measurement, MKS system, meter, kilogram, second. Similarly CGS unit, CGS system, centimeter, gram, second, ठीक है. And SI unit, standard international unit, it is called. Okay, so simple. Now we discuss the charge. ठीक है, चार्ज बता चुके थे हम लोग, डिस्कस कर चुके हैं. चार्ज का मतलब क्या कि whenever, देखिए चार्ज, अगर थोड़ी सी बात और करें तो किसी भी बॉडी की जो सबसे मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी में वो थी वो इनर्शिया. और इनर्शिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास एंड बोथ मास इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनर्शिया आल्सो. तो मास बेसिकली व्हाट इज द इनर्शिया? इनर्शिया इज द मेजर ऑफ द मास. More mass, more inertia, and due to this mass, body feels a force of attraction, and this force is called the gravitational force. We have already discussed, we have already read about this topic in class 9. Class 9 में पूरे syllabus से पढ़ाया जाता है आपको. But there is some another inherent properties which is responsible for the some electrical nature, for electrical forces, and this quantity is called the electric charge. और रियल में ये चार्ज कहां से आया था? रियल में चार्ज आता है ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. Whenever the electron transferred from the one body to another body, the body will be charged. और इसका प्रॉपर स्टडी करने के लिए क्लास 12th में हम लोगों को कराई जाएगी. So what is a charge? So charge is basically, charge is the fundamental property of the matter by which it experience some electric forces या some electric properties. मैं यहां लिख सकता हूं what is the charge. So charge is electric properties like electrostatic force, like electrostatic force. तो चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और कुछ और प्रॉपर्टी चार्ज की पढ़ लेते हैं हम लोग. जैसे एक प्रॉपर्टी है चार्ज की, properties ऑफ चार्ज. तो ये दो तरह का होता है. एक तो होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है negative charge. Okay, so consider two bodies A and B
by somehow electron transferred from one body to second body. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है, ए बॉडी से निकलता है और बी पर जाता है. So this body A lose a single electron and this body gains a single electron. So it carries negative charge, carries positive charge, or it carries negative charge. In the neutral position, the number of proton equal to number of electron. But when a charge is transferred from one body to another body, so A body loses a single charge and similarly B body accept a charge. Charge कह सकते हैं accept a electron. So it carries positive charge and it carries negative charge. Okay, so positive charge का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का लूज करना. ठीक है, डोनेशन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया गेन ऑफ चार्ज, या सिंबल कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर अगर इसकी चार्ज की यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, यूनिट इज कूलॉम. ठीक है, और ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये CGS में यूनिट होती है. ठीक है, जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज, मिनिमम पॉसिबल जो चार्ज है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज होता है वो होता है प्लस माइनस ई. प्लस माइनस ई मीन्स कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ऑन इलेक्ट्रॉन, और जो कि होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन के केस में माइनस, प्रोटॉन के केस में प्लस. इट विल बी 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So this is the minimum possible charge of any body and it is also known as the fundamental charge. Fundamental charge. Now next property. ठीक है, देखिए अगर किसी भी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है, चार्ज बॉडी की चार्जिंग का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो 1 2 3 यानी एक इंटीग्रल नंबर, एक इंटीजर्स होगा. तो चार्ज ऑन एनी बॉडी इज मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज. नाउ वी कैन से द चार्ज ऑफ एनी बॉडी, charge of a body is always integral multiple of E. That means the Q equals to plus minus NE, and this is called quantization of charge. Quantization of charge. ओके, अच्छा एक चीज और समझ सकते हैं कि हमें पहले भी पढ़कर आए हैं कि I equal to Q by T. Similarly, it can be also written NE by T. अच्छा एक बात और देख लीजिए कि I एक स्केलर क्वांटिटी है.
ठीक है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर द क्वांटिटीज व्हिच नीड्स डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, तो उन्हें हम लोग कहते हैं वेक्टर, एंड द क्वांटिटीज व्हिच नीड्स ओनली द मैग्नीट्यूड कॉल्ड द स्केलर। बट इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट वी नीड्स डायरेक्शन एज वेल एज magnitude. So we can also say that the electric current has the magnitude as well as direction, but it is also a scalar quantity. ठीक है, वैसे तो एक क्वांटिटी होती है इसे बोलते हैं टेंसर, बट हम लोग अपने क्लास 10 सिलेबस में इसे स्केलर मानेंगे। क्यों होता है? बिकॉज द एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज सेम एज द स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी एक वायर पर ऐसे यहां से 3 एम्पियर करंट आ रही हो, यूनिट ऑफ करंट इज 3 एम्पियर, और यहां से 4 एम्पियर करंट आ रही हो, तो इस वायर पर ऐसे टोटल 7 एम्पियर करंट आए। इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन द एंगल। सो जनरली इलेक्ट्रिक करंट विल बी कंसीडर्ड एज द स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली चार्ज इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। ठीक, कुछ और प्रॉपर्टीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रिगार्डिंग द सिलेबस, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जो चार्ज है ना, इट इज इंडिपेंडेंट टू वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाइल मास इज द डिपेंड ऑन द स्पीड। एक होता है रेस्ट मास और एक होता है डायनेमिक मास। तो इस जो मास है वो वेरिएबल होता है रिगार्डिंग टू द स्पीड, रिगार्डिंग टू द वेलोसिटी। इसे बोलते हैं इनवेरिएबल या इनवेरिएंस ऑफ द स्पीड। तो क्या होता है? इट इज इंडिपेंडेंट टू स्पीड। चार्ज इज वेलोसिटी। ओके, सो एक और समझ सकते हैं कि दो सिमिलर चार्ज लाइक चार्जेस लाइक प्लस एंड प्लस, माइनस एंड माइनस, similar charge shows force of repulsion, force of repulsion। तो like charges क्या करेंगे? like charges shows force of repulsion, but unlike charge like plus and minus shows force of attraction। Okay, so these are the some प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग द चार्ज। और भी प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन हमारे सिलेबस में चार्ज बहुत ज्यादा नहीं है क्लास 10 में, तो जितना है उसी के हिसाब से चलते हैं। ओके, सो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी इज मेजर्ड बाय द कूलम, और ये अब साइंटिस्ट कूलम साइंटिस्ट के ऑनर में इसका चार्ज क्या रखा, यूनिट क्या रखी गई। ठीक है, सिमिलरली पढ़ चुके टू लाइक पॉइंट चार्जेस, ये क्या करेंगे? फोर्स ऑफ क्या करेंगे? रिपल करेंगे। टू लाइक चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड प्लेस इन वैक्यूम डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, सो इट इज अ डिफिनेशन। रिपल ईच अदर। फोर्स होगा 9 × 10⁹। कितना फोर्स होता है? ये क्लास 10 में फॉर्मूला होता है, इसे बोलते हैं F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। उस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो ईच चार्ज इज कॉल्ड द 1 कूलम। सो कूलम की डिफिनेशन दी गई है, टू लाइक चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, प्लेस इन अ वैक्यूम होगा, रिपल ईच कदर करेंगे, फोर्स जो लगेगा वो 9 × 10⁹ होगा, तो चार्ज कितना हो जाएगा? 1 कूलम। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द 1.6 × 10⁻19। पहले भी पढ़ चुके हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय द फॉर्मूला Q = Ne। सो n, व्हाट इज द n? n इज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। Okay, this is the number of electron for 1 coulomb charge. So in the 1 coulomb charge 6.25 into 10⁻18 number of electrons. ठीक। Now volt. So SI unit of the potential is the volt. Already discuss कर चुके हैं हम लोग।
तो ये हाई वोल्ट डेंजर आपका निशान अक्सर मिल जाता होगा, ऐसा खतरा का निशान आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर बहुत हाई वोल्टेज का निशान होगा। ये जो साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द वोल्टाइक सेल, उनके ऑनर में दिया गया इसका नाम। पोटेंशियल डिफरेंस V का है माना गया, Q चार्ज Q is flowing from high potential to low potential, so work done is moving in charge, so V equals to W by Q, so volt is equal to 1 joule per coulomb. So now definition of the 1 volt. So 1 volt is the potential difference between two points in the current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the another. Simple. So what is the meaning of the volt? Volt is means the work done on moving a charge for one place to a high potential to low potential. Okay, so per unit it is the कह सकते हैं कि it is the ratio of the work upon charge, या simple it is the work by per unit charge. Okay, so definition of the 1 volt is the very important for the board. So 1 volt is equal to 1 joule per coulomb, and the another unit, small unit, 1 millivolt. So 1 millivolt, that means 1 into 10 to the power minus 3 volt. So 1 millivolt is equal to 10 to the power minus 3 volt. So big unit, kilovolt. 1 kilovolt is equal to 10 to the power 3 volt. 1 megavolt, okay, so 10 to the power 6. So for millivolt multiplied by 10 to the power minus 3 kilovolt किसी भी क्वांटिटी के लिए, ठीक है, जैसे किलो जूल 10 टू द पावर 3 जूल, ठीक है, और मेगा 10 टू द पावर 6, ये जनरल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। Now we discuss electric current. What is the electric current? Electric current is the rate of charge flowing. Suppose the Q charge is flowing for the time t, then the I will be Q by T. I equals to Q by T. Electric current I equal to electric charge upon time, and the unit of the electric current is the ampere. The ampere is the unit of the electric current, and the direction of the electric current is always opposite to the flow of the electron, and also we can say the direction of the electric current is always that of moving of positive charge. Okay, so direction of the electric current is always opposite to the motion of the electron, and we can also say that the direction of the electric current is same as that of positive charge moving. Okay, and the definition of 1 ampere is, so 1 ampere is the constituted by the flow of 1 coulomb of charge in the 1 second. So 1 ampere is really, what is the 1 ampere? 1 ampere is the current constituted by the 1 coulomb charge on flowing 1 second. 1 milliampere, that is 1 upon 1000 ampere, and similarly 1 upon 10 to power 3 ampere and 10 to power minus 3 ampere. Although electric current has magnitude as well direction, but electric current is not a vector quantity. Electric current is the tensor quantity. Okay, because the addition or subtraction is the addition and subtraction of the electric current is same as scalar quantity. So electric current is a vector quantity. Okay, sorry, electric current is a scalar quantity. Now move to the next one. Match the following. Electric current, ampere, unit of the electric current is ampere, and the electric charge, unit of charge is the coulomb, and the potential difference, unit of potential difference is volt. Okay, now numerical based on the Q equals to IT, and W is equal to VQ and Q is equal to NE. So this is the type A of examples in where we use Q is equal to IT, W is equal to V and Q equal to NE. Now move to the question number first. The question number first is saying a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of the electric charge that flows through the circuit. So in the question
current I is given, which is 0.5 ampere. Time t is given 20 minutes. First we convert this time into second, because the electric current is always I is equal to Q by T, where T is in second, that is charge per unit time, yani coulomb per unit second is ampere. Okay, so this is 600 second and we have to calculate the charge. So simple Q is equal to IT, use Q equal to IT, Q is equal to 0.5 into 60, that is 300 coulomb. Okay, now move to the next question. How much work is done in moving a charge of magnitude 2 coulomb from a point at 118 volts to at a 120? Okay, so here we will use charge, the given values is charge Q is equal to 2 coulomb, potential difference is given. What is the potential difference? Potential difference, that is V final, yani higher potential minus lower potential. So higher potential is 128 is given and the lower potential is 118. So potential difference will be 10 volt. So work is equal to V is equal to, in real formula is W is equal to delta V into Q, not a V equal to Q. The formula is delta V into Q. So put all appropriate values. So now answer will be 20 joule. Now move to the next question. Calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge, or so that the 1 ampere is the equivalent to the flow of the 6.25 electron. So simple. In the question given, charge on electron is equal to 1.6 into 10 to power 19. Q is 1 coulomb and we have to calculate the number of electron. So we will use Q equal to NE. So N equal to Q by E, and E is 1.6 into 10 to power minus 19. So answer will be 6.25 into 10 to the power 18. So these both questions are same. In this question calculate the number of electron, and in this question so that the number of electron is 6.25 into 10 to the power 18.